Die Deutschen kaufen Lebensmittel nicht so gern und so viel, nicht so oft. Nur 3,7% kaufen Lebensmittel im Internet. Aber Bücher und CDs, Bücher und DVDs kaufen 59,9%. Also das heißt fast 60%. Das ist viel. Und warum kaufen die Deutschen Eintrittskarten, Konzertkarten? Wie viel Prozent? 31. 31%. Das wurde auch gefragt. It was asked. Okay. Und warum kaufen Sie Reisen nicht gerne im Internet? Reisen. Jetzt und 30,4%. Okay. Sie haben kein Vertrauen. Sie vertrauen nicht. Sie Sie haben kein vertrauen Vertrauen. nicht. Ja. Oder Sie Sie vertrauen nicht. Sie fragen sich, ob Ihre Kreditkartennummer im Netz wirklich sicher ist. They doubt. Sie fragen sich means they doubt whether their credit card number in internet is safe or not. They doubt about it. Netz ist safe. Netz मतलब network means internet. Wirklich sicher ist. Sicher Yeah. ist okay. Safe. Sicher is safe and Netz मतलब network means Okay. Internet. Ja, so ist es. Hatten Sie Probleme in Audio auch? Moment. Audio haben Sie gehört? Gibt es Problem? Hatten Sie Problem in Audio? Wenn Sie irgendwelche Problem haben, könnte man das auch hören. Das war okay? Yes. Okay. Yes, sir. Cool. Richtig. Also dann können wir auch checken, was ist eigentlich am Wochenende, was die Deutschen normalerweise am Wochenende machen. Wie verbringen sie ihre Freizeit? How they spend their free time? Was sie machen? Mit wem sie zusammen sind? Wo? Die Orte. Einige gehen am Wochenende vielleicht im Club, in Vereine, verbringen sie auch ihre Zeit. Einige wollen einfach in die Disco gehen. Einige Deutsche bleiben vielleicht mit Freunden zusammen und kochen. Was die Deutschen normalerweise machen, das sehen wir hier. Ausgehen. Ausgehen ist Outing. Leute treffen, aber wo? Wo treffen wir neue Leute? In Indien treffen wir neue Leute normalerweise in College, an der Uni, in der Schule und im Restaurant vielleicht, ja, aber wo noch? In Messen und in Hochzeiten. Hochzeit? Marriage, Weddings, Marriage वगैरह. In Hochzeiten oder Club haben wir nicht so viele, aber ja, oder Kaffee 30, ja, hier haben wir 30. Kaffeehaus gibt es auch, aber nicht so viele. So, wir checken, was sie machen, dann bekommen wir auch Ideen. What these Germans do, then we'll also have ideas कि ये हमारे यहाँ भी करते हैं कि नहीं. Wohin am Wochenende? Tamina Schubert. Was sagt sie? Priti, du kannst das lesen. Was sagt Tamina? Was macht sie am Wochenende? Ich treffe mich oft mit meinen Freundinnen in der Stadt. Wir gehen zum Italiener Eis
Essen oder einen Latte Macchiato trinken und unterhalten uns über Leute, die wir kennen. Freitags gehen wir oft in einen Club, zum Beispiel im Walschhaus. Da gibt es House, Black und Hip-Hop. Wir tanzen fast die ganze Nacht. Ich doch Egal. Egal. Wir müssen ja am nächsten Tag nicht arbeiten. Manchmal gehen wir auch zum Tanzen ins Studio Latino. Das ist mal was anderes und Salsa und Merengue sind cool. Okay. Tamina Schubert 21. So Tamina 21. Was sagt sie? Ich treffe mich. It means the verb is sich treffen. That's why ich becomes mich. Ich treffe mich oft mit meinen Freundinnen in der Stadt. I meet with friends, female friends in the city and go to Italiener. Eis essen oder einen Latte Macchiato trinken und unterhalten. गपशप करते हैं हम लोग uns über Leute, die wir kennen, about the people whom we know. हमारे जानकार लोगों के बारे में गपशप मारते हैं, गप्पे मारते हैं, थोड़े बहुत पीछे से बात कर लेते हैं उनकी. Freitags gehen wir oft in einen Club and on Fridays, on every Friday, we go in a club. Zum Beispiel ins Waschhaus. For example, this is name of a club. Da gibt es House, Black and Hip Hop. These are the examples. Wir tanzen fast die ganze Nacht. And Friday को हम जब जाते हैं, whole night we dance. Ist doch egal. Egal मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता अगले दिन कौन सा काम करना है. Wir müssen ja am nächsten Tag nicht arbeiten. Manchmal gehen wir auch zum Tanzen ins Studio Latino. This is also some dance studio. Das ist mal was anderes. Und Salsa, Merengue sind cool. Okay, das ist ihre. Und gibt es hier auch noch jemand? Nur eine Person sagt etwas. Okay, hier haben wir auch Thomas und Buri. Wer liest? Thomas Buri 42. Sanjay, Reshma? Reshma, willst du lesen? Ja, Sir. Bitte schon. Thomas Buri 42, Gita Stockler Buri 36 Bird. Freitags gehen meine Frau und ich oft ins Theater oder in die Oper, Theater. weil wir ein Cultural Monument haben. Im Frühling gibt es hier in Bern immer ein internationales Jazz Festival, das in der Schweiz sehr bekannt ist. Da gehen wir natürlich hin und treffen uns mit Freunden, die auch Jazz-Fans sind. Unsere Freunde besuchen wir auch am Wochenende oder sie kommen zu uns. Wir kochen dann zusammen, das ist billiger als das Essen im Restaurant und wir haben eine Menge Spaß. Wir haben eine Menge Spaß. We have lot of fun. Okay, gut. So, das ist eigentlich fast selbstverständlich. ज़्यादातर तो आपको वैसे ही समझ में आ गया. हस्बैंड वाइफ है ये थॉमस बुरी और Beata Stockler Buri. Gehen oft ins Theater. H silent है. They go to theater often. Oft means often. Theater जाना पसंद है इनको भाई. Oder in the opera or in some opera house while we are in Kulturabonnement haben. Kulturabonnement. Fixed ticket जो होती है discounted ticket regular visitors के लिए. So they have this kind of special ticket. Including How to pronounce this Kultur? abonnement. 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 Yeah.
So Kultur is one word and abonnement. Abonnement. Yeah. So फ्रेंच में कैसे पढ़ेंगे इसको? मेंट को तो शायद गायब भी कर देंगे. मैं यही बोलने वाला था, सेम वर्ड फ्रेंच में भी आबोने. आपको बस इतना ही बोलना पड़ेगा abonne, right? Because मैं अगर बोलूंगा तो अगर कुलचुरल अबोनेमो. yes, आप तो रेस्टोरेंट को भी रेस्टोरेंट इतना ही टिपका देते हो ना. रेस्टोरेंट. यस, रेस्टोरेंट. तो आगे का तो गायब ही है. लास्ट का खा जाते हो. यस, इंटरेस्टिंग है वैसे. और मेरे को लगता है ज्यादा चैलेंजिंग होगा क्योंकि उसमें कितना खाना है. सर इसमें एक्चुअली फ्रेंच और जर्मन में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि जर्मन आपको पढ़नी पड़ती है, मतलब क्योंकि ग्रामर की धीरे धीरे आपको आती है. फ्रेंच की ग्रामर आपको 4-5 महीने में आराम से आ जाएगी, लेकिन उसका एक्सेंट नहीं आता. हाँ, बस ये डिफरेंस है. और मैंने ये चीज देखी है कि फ्रेंच लोग बहुत भी पढ़ लेते हैं ना तो भी वो बोलने से डरते रहते हैं. मेरा एक्सपीरियंस अलग हो सकता है, लेकिन फ्रेंच उतना बोलने में लोग हिचकते हैं. सर एक्सेंट की वजह से. हाँ, वही रीजन है. एक्सेंट पकड़ना थोड़ा टिपिकल होता है, तो काफी दिक्कत होती है. Yes. So, Kultur Abonnement haben im Frühling gibt es hier in Bern immer ein internationales Jazzfestival. In Frühling मतलब in Spring Season, बसंत ऋतु में there is special international Jazz Festival, das in der Schweiz sehr bekannt ist and it is very famous in Switzerland. Da gehen wir natürlich hin. Of course we go there und treffen uns mit Freunden, die auch Jazzfans sind. And we also meet our friends who are also Jazzfans. So देखो relative pronoun के कारण verb last में आई है. Unsere Freunde besuchen wir. इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है? Unsere Freunde besuchen wir auch am Wochenende und sie kommen zu uns. Unsere Freunde, यही सब्जेक्ट, यही है ना सब्जेक्ट? Yes. No, it's not. नहीं सर, वियर होगा. Actually, wir. Wir. Wir besuchen unsere Freunde. Yes, ये ऐसे है. Wir besuchen unsere Freunde. Because unsere Freunde तो नॉमिनेटिव आकुजाटिव दोनों में ऐसा क्या ऐसा ही रहने वाला है. लेकिन wir तो uns बन जाएगा ना. तो सब्जेक्ट को हम लोग थर्ड पोजीशन पे भी रख सकते हैं और फर्स्ट पोजीशन पे भी. लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्यों लिखा? इंपॉर्टेंस देने के लिए. हमारे फ्रेंड्स को विजिट करते हैं हम लोग ऐसे. So unsere Freunde besuchen wir auch am Wochenende oder sie kommen zu uns. Or maybe sometimes they also come to us. Wir kochen dann zusammen. We cook together. Das ist billiger als das Essen im Restaurant. Und wir haben eine Menge Spaß. And we have lot of fun. Okay, next. Andreas का भी देखते हैं. Andreas क्या करते हैं वीकेंड में? Yes, next person who will read. Das ist uns wichtig. Shilpa. Ja. Okay. Mein Wochenende beginnt am Donnerstagabend um 19:30 Uhr. Dann gehe ich zum Stimmschiff in das Restaurant zur Goldenen Traube und treffe mich mit alten Freunden und Kollegen. Wir spielen Karten, Meister, Skat, trinken ein Bierchen oder zwei und unterhalten uns über Politik und was sonst so auf der Welt passiert. Yeah. So he's saying what he does. Mein Wochenende beginnt am Donnerstagabend. इसका तो बंदे का थर्सडे इवनिंग को ही स्टार्ट हो जाता है. फ्राइडे का भी वेट नहीं करना इनको. 19:30 Dann gehe ich zum Stammtisch. अरे ये तो Stammtisch वाला आदमी है. Stammtisch in das Restaurant zur Goldenen Traube. And कौन से रेस्टोरेंट में आते हैं ये जनरली? Zur Goldenen Traube. This is the name of the restaurant. Und treffe mich mit alten Freunden und Kollegen. I meet with my old colleagues and friends. Wir spielen
Karten, meistens Skat und trinken ein Bierchen oder zwei. एक आध घूंट ले लेते हैं und unterhalten uns über die Politik, about the politics und was sonst auf der Welt passiert and what is happening around the world. We talk about. बड़े हैं तो हम लोग तो इंटरनेशनल चर्चा ही करते हैं. Okay, cool. So, Bierchen oder zwei, ein Bierchen oder zwei ist one beer or two? Two Or, और two. yeah. तो मतलब बियर तो होता है पूरा बियर. अब ये बियरसन का मतलब ये कह रहे हैं छोटा मोटा एक आध पैक ले लेते हैं, ऐसा मीनिंग है इसका. एक आध. यस. And Stimmtisch? स्टामटिश. Sorry. स्टामटिश जो है हम लोग हर दिन जो करते हैं वो स्टामटिश है. लेकिन स्टामटिश होता क्या है? स्टामटिश उसको बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर लोग on a particular time for a particular purpose meet regularly according to their interest. मतलब for example we are German language lovers, so on Stammtisch we talk about some topic and we meet regularly every day from 12 to 13. So this is the fixed time. People come around the world but they speak on the topic. So this is our It's Stammtisch. around the table, talk around the table. We can Yes, say. generally talk around the table. Yes, ये हमारा वाला ऑनलाइन हो गया. But generally they talk around the table. They come, sit, maybe they play cards. So that is Stammtisch. Maybe they just drink beer. That is their Stammtisch. They meet regularly according to their interest. Maybe you come for some other purpose. So das ist Stammtisch. Means इंटरेस्ट के हिसाब से पर्टिकुलर लोग पर्टिकुलर फिक्स टाइम पे पर्टिकुलर पर्पज के लिए मिलते हैं. दैट इज Stammtisch. So here drei Personen haben wir gelesen. Wohin? Tamina. Und was? Wohin und was का मतलब है where she goes to and what she does. Tamina. फिर इन डिस्को tanzen in Studio Latino. Okay. In die Disco gehen. Studio Latino. Und für tanzen. Ja. So tanzen, Studio Latino oder und Eisessen oder sie gehen auch, sie geht zum Italiener. Eisessen oder Latte Macchiato trinken. Yeah. Person 2. Thomas und Beate. Was und wohin? Where they go and what they do. Sie gehen zu Oft ins Theater und in die Opera. Theater und Opera. Okay. Klar. Und was machen Sie? Sie sind Sie treffen seine Freunde. Ja, Sie Ihre besuchen. Freunde. Ja, Sie besuchen Ihre Freunde. Oder die Freunde besuchen Sie. Ja. Und Sie kochen. Sie kochen Sie kochen zusammen. Ja, zusammen. Sie kochen auch zusammen. Das ist dann auch. Das macht Spaß. Und manchmal Jazz Festival ist da. Person 3, Andreas. Wohin und was? Andreas. Wir gehen zur Golden Traube. Andreas geht. Singular. Andreas geht zur Golden Traube und treffe mit seinem Freunden. Okay. Kollegen. Richtig. Oder ja, und was? Trinkt Bier oder spielt Karten und Für Stammtisch. ja,
Treffen für Stammtisch. Und sie unterhalten über Politik. Sie unterhalten sich über Politik und was sonst auf der Welt los ist oder passiert. They also talk about the world politics and what is happening around. If you ask someone or your interest, ich habe Lust, Lust haben auf, ich würde gern, किसी चीज का आपका मन है, so there are two ways. Ich habe Lust auf. After Lust haben auf, you will take some noun and ich würde gern and then some word. If you talk about your interest, for example, I am interested in politics, so politics, some noun is there, so I will say ich habe Lust auf Politik. I am interested in cinema, I will say ich habe Lust auf das Kino. Noun will be there. Lust haben auf. Lust haben auf. Whenever we are using lust, there will be a noun. Yes, Lust haben is fix. अगला Lust नहीं आएगा. Lust haben and then auf fix preposition is also there. And I would like to eat chocolate. So eat verb is there. Then I should say ich würde gern Schokolade essen. So now worauf haben Sie Lust und was würden Sie gerne machen? आप एक एक सेंटेंस लुस्ट haben auf से बनाओ, एक एक सेंटेंस ich würde gern. फ्री टाइम में आप क्या करना चाहोगे? आपकी किस चीज की इच्छा रहती है? या ich habe Lust auf Kino, ich habe Lust auf Pizza, Orangensaft, ich habe Lust auf Yoga. और योगा machen बोलना हो तो ich würde gerne Yoga machen. Everyone will make one or two sentences. Pankaj. In meiner Freizeit habe ich Lust auf Wandern in den Berg. Wandern. Wander in den Berg. Okay. So ये गलत हो गया शायद wander में वर्ब डालना है. Wander जो है as a noun अगर आप यूज करोगे तब उसमें आएगा ना. All the verbs are also nouns. Okay. Try another sentence. उसको आप ऐसे बोलते या तो ich würde gern also in Bergen wandern, पहाड़ों में घूमना as a verb. Ich würde gern mit meinen Kindern spielen. Ich würde gern mit meinen Kindern spielen. Okay, gut. Okay, noch jemand? Ich habe Lust auf grünen Tee trinken. Ich habe Lust auf, देखो trinken बोलना है तो फिर नीचे वाले से बोलो, वर्ब यूज करना चाहते हो तो Ich würde gern grünen Tee trinken. Okay, perfect. Sanjay, Preeti, Arpit, Lust haben auch. Yes sir, may I? Ja, bitte, gerne. Ich habe Lust auf Kino und die Fernsehserie. Okay, Fernsehserie. Yes sir. Aha. Ich habe Lust auf sir auf das Essen होगा या auf Essen होगा? Auf das Essen. Auf das Essen aus Indien. Aus Indien. Okay. So we can use that ich habe Lust auf Indisch Essen. Indisches Essen. Indisches Essen. Indischen Essen. Indisches. Because Essen is das Essen. Indisches, okay. Ja. Oder indische Küche.
Indicious, Essen, Indice, Küche. या वो तो एंडिंग अकॉर्डिंगली लग रही है ना. नाउन अगर दास है तो यस लगा दिया मैंने. अगर अकुजाटिव ले रहे हैं दोनों ही केसेस में हाबन. और ये वर्ब है ना सर, एसन क्यूशे, ये वर्ब कंसीडर किया आपने? ना वर्ब नहीं है ये नहीं, नाउन. नाउन, सॉरी, ये नाउन है. नाउन है, दोनों ही नाउन है. आपको बोलो मुझे पिज्जा खाना है, कैसे बोलोगे? पिज्जा खाना है. Ich will das Pizza essen. Ich würde gern das Pizza essen. दी पिज्जा. Ich würde Pizza essen oder ich würde gerne eine Pizza essen. क्योंकि एसन वर्ब काम में लेते ही हमको इस डायरेक्शन में चले जाना है. नाउन यूज करना है तो ये, वर्ब यूज करनी है तो ये. Ich habe Lust auf indisches Süßigkeiten. Indice Süßigkeiten. Süßigkeiten ist die. Die Süßigkeit. Yes, correct. Ich würde gern schlafen. Ich würde, ja, Ich würde gern schlafen in meiner Freizeit. okay. Ja, Ist das gut? Okay. Oder ich würde gern Fernsehen. That can also be. या देखो फैंजेर वर्ब भी होती है, नाउन भी होता है. अगर आपको एज ए वर्ब यूज करना है तो बोलो ich würde gern Fernsehen. Yes. And if you say ich habe Lust auf Fernseher as a noun. Fernseher. Yeah. Okay. Then it will be Fernseher. Actually as a noun it is also Fernseher. And all the verbs can be also noun. So Fernsehen वर्ब होती है, उसको ही कैपिटल लिख दो तो नाउन भी हो गया. ऐसा कैसा? बट हर एक वर्ब को आप नाउन बनाते हो तो उसका आर्टिकल दास होता है. तो नाउन के केस में तो ये दोनों चलेंगे. Ich habe Lust auf Fernseher, ich habe Lust auf Fernsehen. बट ये दोनों ही नाउन है, लेकिन एज ए वर्ब यूज करना है. Fernsehen. Ich würde gern Fernsehen. So Fernseher also can be used as a noun. Fernseher, not Fernseher. Yes, all the verbs can be used as noun. All the verbs, and this is also Yeah. one. Yeah, आपने last time बताया था, like all the verbs can be Essen, essen. das Das Essen. Essen. Yes, kochen, rauchen, alles. And then वो कहाँ? अंद्रियास यहाँ आता है देखो. सुअर गोल्डन एंड ट्राउब है. दिस इज दैट रेस्टोरेंट. ढूंढ लिया अपन ने कहाँ पे है वो. यहाँ है उसकी स्टाम्पेश है. Im Restaurant Suar Golden and Traube. यहाँ पे है. Sir, I have a doubt. Restaurant name is Golden Traube, right? We are using sur because it's a su plus deer. There. ये नाम ही है पूरा रेस्टोरेंट का. कई लोग Okay. नाम ही कई लोग ऐसे निकाल लेते हैं. Okay. I thought it's su plus deer is sur. बट हियर इट इज क्लामन. क्लामन है ना साथ में. Mm-hmm. ये देखो यहाँ भी रेस्टोरेंट सुअर गोल्डन एंड ट्राउब है. इट्स नॉट प्रीपोजिशन. I was thinking it's a preposition. Yes, yes. I was also thinking in the beginning. But then I realized, oh, it's there. So Suar Golden and Traube. So im Restaurant Suar Golden and Traube. Lesen Sie die Speisekarte und beantworten Sie die Fragen. हम लोग क्या करते हैं, तसल्ली से एक बार देखते हैं कि इस रेस्टोरेंट में मिलता क्या क्या है. आप भी जब कहीं भी जाते हो तो आपको ये हर बार दिखने को मिलता है. तो हम ट्राई करते हैं इसको रीड करने का वन बाय वन. एक एक, जैसे जूपन, एक पर्सन जूपन पढ़ेगा. सूप्स कौन कौन से हैं एक एक करके पढ़ते जाओ नंबर से. पंकज, यू स्टार्ट विद
Jupan. Suppen. Suppe mit Brot für 3,80 Euro. Tomatensuppe mit Sahnehaube. 3,80 Euro. Aha. Sir, can I interrupt? Yeah, beta. Yeah, sir. In the heading, it's all below the heading. It's also written Im Spiegeltal, and then I didn't understand what that meant. Im Address. Spiegeltal. This is the address. Okay. Widerman and yeah, that is the address. Aber here das sollten wir vielleicht auch verstehen. जैसे नाम तो वैसे चीज का नाम ही है, लेकिन थोड़ा सा आइडिया इस बात का भी होना चाहिए कि ये है क्या चीज, पता चले गाय की हड्डी खा गए ना। सो आप अगले को बोलोगे सूप ला लादी का गिलास सूप है। ये गिलास सूप है जो है ये बीफ का सूप है, एक्चुअली गाय का सूप है ये। गिलास सूप है विद ब्रोड। जहां भी सूप लेते हो आप तो ब्रेड का टुकड़ा देते हैं साथ में। भूख भी लगी होगी इसको ऐसे सोच के। सो गिलास सूप है विद ब्रोड, ये गाय का है। बीफ अगर आप नहीं खाते हो तो पता होना चाहिए आपको, खाते हो तो अलग बात है, नहीं खाते हो तो पता हो कि गिलास सूप में क्या है। टोमाटन सूप है विद ज़ानहाउबे, टोमेटो सूप विद ज़ानहाउबे। ज़ानहाउबे का मतलब है क्रीम टॉपिंग उसकी। ज़ानहाउबे, हाउबे का मतलब है उसकी टॉपिंग, ऊपर खूब सारी क्रीम लगी हुई। टोमाटन सूप है, टोमेटो सूप के ऊपर वो टॉपिंग होगी साथ में। क्लाइनम काल्टे गेरिस्ट है, छोटी गेरिस्ट है, मतलब फुल फूड नहीं, छोटा। संजय विष्णुदा, सर फिंगर फूड बोल सकते हैं क्या? यस सर। हाँ मतलब फुल मील नहीं होके क्या बोलेंगे उसको, ब्रंच टाइप में। उसको फोर्स पीले बोलते हैं सर। फोर स्पाइस है। हाँ, फोर्स स्पाइस है। फोर स्पाइस बोल सकते हैं, फोर स्पाइस, लेकिन उसको बोलते हैं जो खाने से पहले जस्ट खाते हैं, लाइक स्टार्टर्स। स्टार्टर्स, यस दैट इज फोर स्पाइस है। बट यहाँ पे तो क्लाइंट ऑर्डर कैटेगरिस्ट है, ये तो एक काइंड ऑफ फूड ही है। बट कोई आदमी को बहुत तेज भूख नहीं हो तो वो उसको ट्राई करेगा, छोटी प्लेट काइंड ऑफ। यस संजय, यू आर रीडिंग? Yes, sir. Kleine und kalte Gerichte, Wurstplatte mit Boehm, Brot und Gurke, 7 Euro, 60 Cent, Toast Hawaii, Schinken und Ananas auf Toast mit Käse, überbacken, 6 Euro, 50 Cent, Open Kartoffel mit Kräuter Quark, 7 Euro 30 Cent. Okay, also hier können wir sehen Wurstplatte. Wurstplatte. Wurst is again meat, meat सॉसेज। sausage. Yes, sausage की plate mit Bauern Brot und Gurke. So there is a special kind of bread, बड़ी bread आती है। und Gurke means ककड़ी, कुकुम्बर। यस, सो इसमें सॉसेज होगा, बड़ी वाली जो किसान लोग खाते हैं बड़ी ब्रेड वो, एंड कुकुम्बर। टोस्ट हवाई, इसमें शिंकन und अनानास ऑफ टोस्ट मिट केस है। यूबरबाकन, यूबरबाकन का मतलब है ओवर बेक्ड चीज, चीज ज्यादा बेक किया हुआ। एंड शिंकन इज हम, सुअर का नहीं खाता है। पिग का मीट है ये। शिंकन देखते ही समझ जाया करो कि ये सुअर वाला लेके आया अपने लिए। ओके, und dann offen Kartoffel, Kartoffel mit Kräuter Quark, Kräuter Quark जैसे एक स्पेशल काइंड ऑफ Kräuter का मतलब है मसालेदार, उसमें अलग अलग तरह के herb, it is called a herb. Herb. Kräuter butter भी आता है। यस, हर्ब वाला, करेक्ट, धनिया की तरह ही होता है। धनिया की तरह। यस,
You get Kräuter cream or what butter. Yes, सारे herbs वाले हैं ये. Yeah. Spezialitäten. What are the specialties of this restaurant? Maybe Reshma, you try this. Special Britain. Rumsteak mit grilled tomato, Kartoffel und Salatteller. 14 Euro 90 Cent. So, dann haben Wiener Schnitzel mit Pommes, Fries und Salatteller. 12 Euro 20 Cent. 20. 20 cent. So, हम जब सेंट बोलते हैं और आगे 12 euro 20 भी बोल सकते हैं सीधा. 12 euro 20. Rindschokolade mit Rotkraut und Klossen. 9 Euro 85 Cent. 9. Fischpfanne mit Bratkartoffel. 90 Cent. 8 Euro 19 Cent. या klar. फिश फाने में ब्राट कार्टोफल. सो क्या क्या चीजें हैं ये? रूम स्टीक अगेन गाय की थाई में से निकालते हैं वो मीट है ये. रूम स्टीक मीट ग्रिल टमाटर. सो ग्रिल टोमेटोज आर देयर एंड देन कार्टोफल क्रोकेटन und dann Salatteller. कार्टोफल क्रोकेटन ये एक तरह से डम्पलिंग टाइप में आता है. उसमें से तेल में से निकाला हुआ कार्टोफल क्रोकेटन und boiled Kartoffel with oil. या oil. und Salatteller is salad plate. सलाद की प्लेट. वीनर स्निट्सल. ये जो वीनर स्निट्सल है ये गाय के बछड़े का होता है. मतलब ये थोड़ा गाय वाला जो बड़े जानवर से छोटे जानवर का शायद ज्यादा चलता है वहां पे. तो स्निट्सल जो है गाय के बछड़े का मीट है ये. मिट पोमेस फ्रिट्स फ्रेंच फ्राइज und Salatteller and again सैलड की प्लेट. एंड रिंड. अब वहां पे तो क्या बीफ बहुत चलता है ना, तो हर जगह आपको या तो गाय का मिलेगा या फिर सुअर का मिलेगा. सो रिंड्स औलादे. रिंड्स औलादे का मतलब है ये गाय के बीफ का रोल आता है. रोल मिट रोट क्राउट und क्ल्यूसन. ये क्ल्यूसन अगेन ये डम्पलिंग टाइप में है. ये गोला सा बना के जैसे अपने समोसा तल के निकालते हैं ऐसे वहां भी गोल गोल मोटे से गेंद सा निकाल देते हैं. गुलगुला कह सकते हैं हम. गुलगुला अपने यहाँ पे होता है ना पूरी मिट्टी सी, उसमें निकालते हैं. सो रोट क्राउट जो है अगेन कुछ तो अचार की तरह कुछ तो. रोट क्राउट रिंड्स रोल प्लस रोट क्राउट. क्राउट का मतलब अचार होता है वैसे, तो ये कोई पर्टिकुलर काइंड ऑफ होता होगा. और क्ल्यूसन इज डम्पलिंग. फिश फाने मिट ब्राट कार्टोफल. फिश फाने मछली का है ये ऑफ कोर्स. फाने पैन फ्राइड. हाँ फ्राइड फिश आती है उसमें. Fried fish. Yes, fried fish. Fried cartofel. And Broad Kartoffel. yes, brat का मतलब अगेन फ्राइड. Fried. Also das sind dann 8,90 Euro. Nächste Person bitte. Gemüse und Salate. Who will read? I can. Yeah, Priti. Gemüse und Salate, Groscher, Gewister, Salatteller mit guten Brotstreifen, 7,50 Euro.
verschiedene Salate mit Käse, Ei, Brot, 7,50 Euro. Gemüseauflauf mit Käse überbacken, 8,50 Euro. Überbacken, again overbaked. So, großer gemischter Salatteller. It's a big salad plate. And then Putten Brotstreifen. ये टर्किश डिश है कोई. Und verschiedene Salate mit Käse, different kind of salad with Käse, cheese, Ei, Brot, इनका मिक्स कुछ आता है. Gemüseauflauf. Gemüseauflauf mit Käse überbacken. Gemüseauflauf is अलग अलग डिफरेंट वेजिटेबल्स को मिक्स करके एक मिक्सचर बना देते हैं उसका. Käse überbacken and then cheese, overbaked cheese is also there. Next, für die Kleinen means this is for kids. Next one is for kids. Yeah, Silpa. And then Pankaj. For für die Kleinen, Captain Bar, Fisch Stäbchen, Fisch Stäbchen mit Kartoffelsalat, 3,50 €. Mickey Mouse Taylor, Grillwürstchen mit Pommes Frites und Ketchup, 3,50 €. 3,50 €. 3,50 €. So fish स्टैप्शन का मतलब है बच्चे. ये फ्यूर दी क्लाइनेंट का मतलब है दिस इज फॉर किड्स. तो छोटों को बड़े वाला गाय वाला और वो सब खिलाएंगे, उससे पहले उनको थोड़ा तैयार करेंगे. फिश वाला है यहाँ पे. सो कैप्टन बेयर. तो नाम भी देखो इस तरह के रखे बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए. मिकी माउस टेलर, कैप्टन बेयर. सो फिश स्टैप्शन, एक में फिश होगी एंड देन कार्टोफिल सलाद, आलू का सैलेड होगा. मिकी माउस टेलर में ग्रिल व्यूर्टसन. सो अगेन सॉसेज बट छोटे ग्रिल किए हुए. मीट फ्रेंच फ्राइज एंड केचप. ओके, नेक्स्ट शिल्पा. डेजर्ट, स्वीट्स. Yeah. Desserts, Apple Strudel mit Vanilles mit 4 €. Vanilles mit heißen Kirschen, 84 €. aha. So this is done. Apfel Strudel, एप्पल का केक सा बना हुआ आता है. Apfel Strudel mit Vanilla Eis, वनीला की आइस. Vanilla Eis mit heißen Kirschen, hot cherry. And the next, Okay. alcohol. Alkoholfrei Getränk. Getränke, Coca-Cola plural. Getränke. Alkoholfrei Getränke. Coca-Cola, Fanta, 200 ml, we can say. 51 €. Saft, Apple, Orange, Tomato, Mineral 2 €. Mineralwasser, 81 €. Klaus Haller Bier, alkoholfrei, 22 €. Alkoholische Getränke, Bier von Fass, 23 €. Rot, Weiß, Wein, 53 €. या 3,50 €. Ja, 3,50 €. या €. को पहले ही पढ़ देते हैं अपन. हाँ. या फिर 3,20 € बोल सकते हैं. 3, कोमा को कोमा पढ़ेंगे या तो 3,20 € या फिर 3,20. Okay. So alcohol free, without alcohol, these drinks are there: cola, Fanta, Saft, Mineralwasser, and Klaus Haller Bier maybe. और beer from fast का मतलब है डायरेक्ट वो पूरा इनका
फास्ट में से शायद वो रेडी सीधी आती है आपके बड़े से उस गिलास में. So that is neat beer kind of. Und rot, Weißwein, Rotwein, this is there. फॉर्म ये है कि सर वो फॉर्म है कि फॉर्म है? This one, foam. Mhm. Beer foam fast. वो डायरेक्ट प्योर From the tap है, हाँ. Beer from fast is the tap beer. फॉर्म जो है वो फॉर्म है कि फॉर्म ही है? फोम ही है वो. फोर्डेम. फॉर्म. फोन्डेम. फॉर्म. Yes. Beer foam fast. So एक तो जनरल बियर बोतल में आती है. यहाँ पे सीधा उनका शायद बड़ा सा कोई टंकी टाइप में सी उसमें से सीधा ही ये वाला है. इसको बोलते हैं बियर फोम फास्ट. तो ये भरा हुआ है इनका डायरेक्ट सोर्स उसी में से बियर फोम फास्ट. ये वाली दो तो बड़ी सारी भी और शायद ताजा. बस इस बियर फोम फास्ट. सर प्रेशन बियर बोलते हैं. क्या बोलते हैं? प्रेशन प्रेशन मतलब प्रेस्ड बियर. जयपुर में भी है तो प्रेस्ड बियर बोलते हैं. प्रेस्ड बियर बोलते हैं. ओके. तो इसकी क्या खास बात है? इसके टेस्ट में उसके टेस्ट में क्या फर्क है? सर वो पैक्ड होती है तो उसमें ऑब्वियसली वो जो है प्रिजर्वेटिव्स होते हैं. ये फ्रेश होती है. ओके. बिना प्रिजर्वेटिव्स के. ओके. क्योंकि वो तो पता नहीं कब की बनी हुई होगी है ना. इसमें प्योर है. तो अभी हम लोग उसके रेस्टोरेंट में पढ़ रहे थे ना कि क्या क्या बेच रहा है वो यहाँ भी हमको दिख रहे हैं. सो दिस इज डन रोट वाइन. दिस इज बियर. इसमें अपन को दिख जाएगा. ये जो गाय के मीट वाले को सूप को क्या बोला था? गुलास जूप है. यू कैन सी हियर गुलास जूप है. ये वो बछड़े वाला मीट. क्या वर्ड आया था उसके लिए? Schnitzel. स्निट्सल. सो इस डायलॉग से पता चलेगा आपको. haben Sie schon gewählt? आपने क्या सेलेक्ट कर लिया? क्या खाना है? Ja, ich hätte gern ein alkoholfreies Bier und das Rumstick. Rumstick क्या आया था? गाय के थाई वाला मीट. Rumstick. That one. Yeah, beef you can say. Alkoholfrei Bier und das Rumstick. Mit Grill Tomate. So Rumstick ये देखो ये मीट है नीचे एंड देन ग्रिल टोमाटो. Und vorher ein Glas Suppe. और उससे पहले थोड़ा मुझे गाय का मीट सूप भी दे दो बिटे. Für mich das Wiener Schnitzel mit Salat. For me this Wiener Schnitzel mit Salat und noch einen Apfelsaft bitte and apple juice please. Kann ich vielleicht Pommes frites statt Kartoffelkrakotten haben? Kartoffelkrakotten की जगह मुझे आप फ्रेंच फ्राइज दे दोगे प्लीज. Aber natürlich, of course, give you. So Tomatensuppe, Wurstplatte, ये वर्ड सुन के बार बार आपको प्लेट में दिखेंगे और मेन्यू में तो जरूरी दिखेंगे आपकी प्लेट में. आप ना भी आने दो तो मेन्यू में तो दिखेंगे ही दिखेंगे. Ich hätte gern Tomatensuppe, ich hätte gern die Wurstplatte, Sausage plate please. Für mich bitte auch die Tomatensuppe. Für mich bitte auch die. So कैसे आपसे पूछा जाएगा और कैसे आप आंसर करोगे. सुंगन ब्रेशर की ट्राई करो. एक एक बार सब लोग पढ़ेंगे इसको. दिस इज टंग ट्विस्टर. जैसे Tschechische Skifreunde, frische chinesische Shrimps, Schweizer Schokoladenstatistik, österreichische Skischule, portugiesische Spezialitäten, schwedische Schneeschuhe. Try one by one. Tschechische Skifreunde. Schwedische Schneeschuhe. Ja. Schwedisch. Schweizer Schokoladenstatistik. Schweizer Schokoladenstatistik.
Swiss chocolate states. Anybody else? Try these. Oyster is it? Kishule. Österreichische. Österreichische Skischule. Frische and Portuguese. Portuguese. not Portuguese. I'm reading the second one. Fische, chinesische. Sinejische. Chinesische. Sinejische. Sinejische. Yeah. Chinesische. Chinesische. Shrimps. Shrimps. Schluss. Yeah. Okay. So she shakes die Freunde, frische chinesische Schrift, Weiser Schokoladenstatistik, österreichische Skischule, portugiesische Spezialitäten, schwedische Schneeschule. Schneeschule. Schule. Sorry. Okay. Klar. So, österreichische, portugiesische, frische, सिनेजीश श्रिम्प्स से थोड़ी प्रैक्टिस करके आप एक काम कर सकते हो व्हाट्सएप पे। ये आपका होमवर्क है। अपने व्हाट्सएप के ग्रुप में आप हर कोई लगातार 3 बार बोलेगा और उसको स्वाहा, ठीक है, गाइस। सो थोड़ी प्रैक्टिस करके बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब भी आप रीड करोगे तो लगातार 3 बार पढ़ के और फिर छोड़ोगे उसको। ओके, दिस इज द हाउस ऑफ गावे। सर ऊपर जो है इश हाटे गैन और इश वुडे गैन में एक ही बात है। कॉन्वर्सेशन में कौन सा यूज होता है? इश हेटे गैरन, इश व्यूडे और इश म्योस्टे एक ही बात है। म्योस्टे भी वही बात है, हेटे गैरन भी वही बात है। हेटे गैरन और व्यूडे कास्वाई फॉर्म है, वो भी वही ये बात है। कुल मिला के पोलाइटली कहने का तरीका है ये। ओके, इश हेटे गैरन जब आप बोल रहे हो तो आप एक तरह से इश म्योस्टे ही बोल रहे हो। इश म्योस्टे दी टोमाटनसूप है, इश व्यूडे बिटे दी टोमाटनसूप है। लेकिन हेटे गैरन और म्योस्टे के बाद में आपको नाउन जनरली मिलेगा और व्यूडे के बाद में जनरली आपको एक वर्ब मिलेगी, बट द मीनिंग इज सेम। इश मोस्टे तो आई वुड लाइक टू हैव होता है, तो इट है इश हैट अगेन इज आई वुड लाइक टू हैव। इश आई वुड लाइक टू इश हाटे गैन बोला तो गलत होता है। इश हाबगैरन बोलते नहीं है, इश हेटे गैरन नहीं बोलते हैं। ओके, गलत तो नहीं होगा ऑफ कोर्स ग्रामेटिकली, बट इश हेटे गैरन बोलते हैं। बिकॉज आप कोई भी वर्ब को के साथ गैरन तो लगा ही सकते हो ना। जैसे कोई बोलता है इस कोक है गैरन है, इसका मतलब है कि मुझे कुकिंग पसंद है। इस डांस है गैरन है, मुझे डांस पसंद है। इस उटरिस्ट गैरन है, मुझे पढ़ाना पसंद है, लोगों से बात करना पसंद है। इस स्प्रेशन इट मेंशन जेर गैरन है। सो किसी के भी आप लगा सकते हो वैसे तो, बट कई कई फिक्स एक्सप्रेशन ऐसे होते हैं वो वैसे ही चलते हैं लैंग्वेज में। सो हाबे गैरन की बजाय इस हेटे गैरन है, you will listen. Okay. Now you are in restaurant again. Red metal. Generally you will listen. Nach Wünschen fragen, was kann ich Ihnen bringen? So who will say this? Ober. Ober. Kellner. Kellner oder Kellnerin. Nach Wünschen fragen means they will ask about your wish, what you would like to have. Was kann ich Ihnen bringen? What can I bring for you? Haben Sie schon gewählt? काफी देर हो गई आपको बैठे हुए। वो कहते हैं कुछ लोग भी या टाइम पास करने आए हो। नहीं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे। Haben Sie schon gewählt means have you? सर gewählt का के पे शायद यही होता है gewählt का। हाँ, सेम ही होता है। सेम नहीं होता। ओरिजिनल वर्ब तो वेलन है ना, वेलन। वेलन। So haben Sie schon gewählt? Have you already decided? मतलब डिसाइड हो गया क्या तुम्हारा?
क्या लेंगे? कई लोग टाइम लगाते हैं डिसाइड करने में बहुत सारा, अब हमको तो पहले ही पता रहता है कई लोग. So haben Sie schon gewählt? So you will say ich hätte gerne, wir hätten gerne, if you are more than one. Ich möchte, so it is same actually. Ich nehme, so nehme is not so polite. I am taking or I would like to take. So would like to take is of course polite. So noch einen Salat bitte, एक सलाद और ले आओ please. So ein आएगा कि आईना आएगा कि einen आएगा, it depends what you are asking for. So एक बियर और ले आओ तो बोलोगे noch ein Bier, क्योंकि बियर दास होती है ऐसे. noch ein Brot, जिस शुगर एटफास बेशवेरन, आपको पसंद नहीं आया रेस्टोरेंट में, पैसे ही लग गए आपके, तो आप बोलोगे देयर टेस्ट कॉल्ड, चाय तो ठंडी पिलाई आपने, तो आप नाराजगी दिखा रहे हो अपनी. बेशवेरन का मतलब एक तरह से कंप्लेन. Salzig, salzig, die Suppe ist salzig, सॉल्ट बहुत ज्यादा है, सॉल्टी. सू salzig, सू से तो वैसे भी पता चलता है कि इट इज टू मच, नेगेटिव साइड. सू salzig. और पॉजिटिव बोलना हो तो sehr gut, sehr juice, बहुत स्वीट है, और स्वीट ही चाहिए और स्वीट ही मिल गया तो बोलोगे sehr juice. और एक्स्ट्रा स्वीट लग रहा है आपको तो zu juice. ऐसे भी कोई होता है क्या? चीनी दे दी यार तुमने, पेड़े मांगे थे, चीनी के ही पेड़े क्या ये, सो ज्यादा चीनी डाल दी कुछ. Können Sie mir bitte noch eine Gabel, ein Messer, einen Löffel, ein Pfeffer, Salz bringen, Salt लेके आओ ना, Pfeffer, काली मिर्च लेके आओ, Löffel, Messer, Gabel. So Löffel is spoon, Messer is knife, and Gabel is fork. या bring, और फिर वो बंदा कहेगा यार गलती हो गई अपने से, तो ज्यादा नमक पिला दिया इसको, वो कहेगा स्टूड में लाइट, सॉरी, इसलिए मैं शुरू वापस ले लेता हूँ महाराज, पैसे भी नहीं लगेंगे आपके. सो इसलिए मैं शुरू मैं वापस ले लेता हूँ, इसका मतलब है पैसे नहीं लगेंगे, नहीं तो वापस क्यों लेगा. Ich bringe Ihnen sofort die Gabel, अभी लाया, आपने चम्मच मांगी ना, आपने कांटा मांगा ना, छुरी लाके आऊंगा. einen Moment bitte, just second, 1 second please. Ich frage in die Küche nach. Ich frage in die Küche nach का मतलब एक बार किचन में पता कर लेता हूँ है कि नहीं, है ना, पूछ के बताता हूँ. In die Küche nach, nachfragen. Nach dem Essen fragen. कुछ रेस्टोरेंट में लास्ट में पूछने भी आते हैं कैसा लगा आपको खाना. So schmeckt es Ihnen? टेस्टी लग रहा है ना, कैसी बनी हमारी खीर. schmeckt es Ihnen? sind Sie zufrieden? आप संतुष्ट हो ना. ये टिप देके जाओगे ना, इनडायरेक्टली ये भी मीनिंग हो सकता है इसका. sind Sie zufrieden? अब आपको टिप देनी है तो आप बोलोगे या danke, sehr gut. आपको टिप नहीं देनी, बोलोगे एस गेट, ठीक है, टिप मत मांग लेना. एस गेट का मतलब इनडायरेक्टली ये भी मैसेज है, टिप मत मांग लेना और शिकायत कर दूंगा अंदर, पहले ही तुमने ठीक ठाक सही खाना खिलाया है. वो टिप देने का मन है आपका, या danke, sehr gut. So das ist Redemittel. This is the spoken stuff you have to use. Etwas bestellen means you order something in restaurant. Wünsche fragen. Oh, Dario is da. Dario को कौन पढ़ेगा भाई? Rund ums Essen, खाने के, around the food. Sanjay, bist du bereit? Yes. Sanjay, Dario is waiting for you. Bitte schon. Dario. Dario leading drive month. Hauptmann für System Gastronomy. Dario hat seine Ausbildung bei einer großen Restaurantkette gemacht. Die Restaurantkette, die für ihre Hamburger und Pommes bekannt ist, verkauft
auf der ganzen Welt die gleichen Produkte. Darius' Ausbildung hat 3 Jahre gedauert. Im Restaurant musste er kochen, Gäste beraten, Produkte bestellen, die Produktqualität kontrollieren und an der Kasse arbeiten. Im Büro hat er viel über Marketing gelernt und Abläufe mitorganisiert, weil ihm die Planung und Organisation viel Spaß gemacht haben, möchte er sich spezialisieren. Okay, spezialisieren. Spezialisieren. So, Dario hat seine Ausbildung bei einer großen Restaurantkette gemacht. At a big restaurant chain. Kette is chain. The restaurant kette chain. गले की चेन को बोलते हैं हाल्स केटे. रेस्टोरेंट की भी चेन है, उसको भी केटे बोलते हैं. Die für ihre Hamburger und Pommes bekannt ist. एक ऐसी रेस्टोरेंट चेन के लिए काम करता है, नाम नहीं दिया इसमें, जो पोमस और हमबर्गर के लिए बहुत फेमस है. Verkauft auf der ganzen Welt die gleichen Produkte. In the whole world, this chain is selling the same product. चेन में तो सब में सेम ही प्रोडक्ट बिकते हैं. Dario's Ausbildung hat 3 Jahre gedauert. His training took 3 years. Im Restaurant musste er kochen, Gäste beraten, Produkte bestellen. Das sind deine Aufgaben. इसको रेस्टोरेंट में कुकिंग करनी पड़ती है, गेस्ट्स को एड्रेस करना है, उनको कुछ एडवाइस करना है कि हमारे यहाँ की बियर बहुत बढ़िया है, ये खाना बहुत बढ़िया है, स्पेशलिटी क्या है. प्रोडक्ट बेस्टेलन ऑर्डर करना, प्रोडक्ट क्वालिटी कंट्रोलिeren, क्वालिटी चेक करना प्रोडक्ट की, und an der Kasse arbeiten, और कभी कभी कैश काउंटर पे भी बैठना पड़ जाता है. ये सब इनके काम में है. मल्टी रोल. im Büro hat Müssen का है क्या? Müsste is for was? Im Restaurant musste. Musste का मतलब म्यूशन का past form है ये. Means when he was in restaurant, there he had to cook. Okay, müssen का past form. Yes. प्रोडक्ट बेस्टेलन ऑर्डर्स करना, प्रोडक्ट्स के क्वालिटी चेक करना, क्वालिटी कंट्रोल में इनके अलग डिपार्टमेंट बांट देते हैं, वीकली, मंथली, ऐसे. इन ब्यूरो कभी इसको ऑफिस में ड्यूटी दे दी, रेस्टोरेंट के ऑफिस में, तो hat er über Marketing gelernt und Abläufe mit organisiert. Abläufe का मतलब है इस वीक क्या खाना बनेगा, मंडे को क्या होगा, सलाद में क्या होगा, सब चीजें तो प्लान करनी पड़ती हैं. रोज तो सलाद में ककड़ी नहीं आती ना, अलग अलग. सो मिट ऑर्गेनाइजियर्ट मतलब जो भी बॉस है उसके साथ मिलके इसको ऑर्गेनाइज करना रहता है. इसने ऑर्गेनाइज किया, weil ihm die Planung und Organisation viel Spaß gemacht haben, möchte er sich spezialisieren. बिकॉज उसको ये जो प्लानिंग करना और ये बॉस के साथ में ये सब नेतागिरी करना, इसको ज्यादा नेतागिरी नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में इसको ज्यादा मजा आया काम करने की बजाय चीजों को प्लान करने में. तो इसमें मजा आया. अब ये इसमें स्पेशलाइजेशन करना चाहता है, आगे की पढ़ाई करना चाहता है. सो वो hat Dario seine Ausbildung gemacht. वो कहाँ की इसने अपनी Ausbildung? Eine große Restaurantkette. Ja, bei einem Restaurantkette. Ja, das ist richtig. So last वाले सेंटेंस में while ihm die Planung und organizational viel Spaß gemacht haben. So the verb is coming in the end, right? Coming at the end. Haben. Because of while. But we are using ihm, so have. बिल्कुल सही वाजिब सवाल है तुम्हारा. हम लोग ऐसे बोलते हैं ना 10 मार्क नियर स्पास.
सुना है ऐसा सेंटेंस, 10 macht mir Spaß? 10 macht mir Spaß. कभी सुना होगा das ist mir egal? Das passt mir nicht. Das passt mir. So das passt mir nicht की तो एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास कि भाई पासन डाटिव है इसलिए das passt mir को आ गया, डाटिव आ गया है ना। लेकिन जाइन वर्ब तो डाटिव नहीं है, माखन वर्ब तो डाटिव नहीं है, फिर ये डाटिव कैसे आ गया? सो आप इसको ऐसे ले सकते हो कि जब भी किसी क्वेश्चन का मतलब ये एक स्टेटमेंट है, इसका क्वेश्चन बनेगा तो ये बनेगा कि भाई मजा किसको आ रहा है, तो मजा तो मेरे को आ रहा है, तो इसका क्वेश्चन बनेगा Wem macht das Spaß? To whom? जहां भी to whom का जवाब आता है तो उसको डाटिव ले लेते हैं हम लोग। कभी कभी आप देखोगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी, मतलब das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, तो जाइन के साथ भी कभी कभी आपको दिखेगा कि ये डाटिव कैसे आ गया, तो इसका क्वेश्चन ढूंढो आप, किसके लिए ये इंपॉर्टेंट है? मेरे लिए है इंपॉर्टेंट, das ist mir wichtig, तो क्वेश्चन बनेगा Important for me. wem ist das wichtig? Wem macht das Spaß? मेरे को फर्क नहीं पड़ता, किसको फर्क नहीं पड़ता? इधर आना जरा, उठक बैठक लगा, तो मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तो मेरे को सो होगा फिर wem ist das egal? किसको फर्क नहीं पड़ता? Das ist mir egal. Das macht mir Spaß. Yes. और जो लास्ट में हाँ बनाया है, दिस इज फॉर प्लानिंग ऑन ऑर्गेनाइजेशन, दोनों को मिला के, Okay. yes. नाउ क्लियर. Then wie lange hat die Ausbildung gedauert? How long it took? Drei Jahre. 3 Jahre geht weit. 3 Jahre. Ja, Get out. richtig. Geht dauert. Wo hat er gearbeitet? Arbeitet Arbeitet bekannter Restaurant. Ja. Wo? So by in einem Restaurant here. आया था यहाँ पे कहीं? Im Restaurant. Yes, sir. In dem Restaurant. In einem Restaurant. In einem bekannter Restaurant. In einem bekannten. अगर डाटिव आ गया तो उसके बाद में en जरूर लगेगा। Bekannten Restaurant. Yes, in einem bekannten, क्योंकि अपनी पिस्टल के बाहर निकल गई ना बात, तो डाटिव में हर बार आप चाहे डेफिनेट हो चाहे इंडेफिनेट हो, हर बार en देखोगे। So in einem bekannten Restaurant. Ja. Und welche Aufgaben hat ein Fachmann für System Gastronomie? Which tasks he has to perform? काम क्या क्या थे उसके? System gastronomy is Kochen, Gäste beraten, Produkte bestellen. रेस्टोरेंट वाली पढ़ाई उसने जो करी है, कुकिंग वगैरह वाली, उसको बोलते हैं सिस्टम गास्ट्रोनोमी। Produkt bestellen, Gäste beraten, kochen, quality, Product quality. Qualität, kontrollieren und die Kasse arbeiten. Kasse arbeiten. Richtig. Also kassieren, an der Kasse arbeiten. Ja. Richtig. Und dann, was haben wir noch? इसमें रिलेटिव प्रोनोमन बहुत आएगा। आप एक काम करना कि आज रिलेटिव प्रोनोमन को एक बार रिवाइज करना, जो भी हमने पढ़ा था, फिर इसमें जो चीज आएगी इजीली रिलेट भी कर लोगे, मैं रिवाइज भी करा दूंगा आपको। सो रिलेटिव वाला अभी मैं टच नहीं कर रहा, यू हैव टू जस्ट गो थ्रू अगेन टुडे, फिर कल हम लोग उसको एक बार देखेंगे। जैसे आई मान डेयर, ये सब आ रहा है, यहाँ भी रिलेटिव प्रोनोमन आया है। सो जो पहले पढ़ा था एक बार उसको रिवाइज करके आओगे, देन एवरीवेयर यू विल सी नाउ रिलेटिव एंड रिलेटिव एंड रिलेटिव।
तो इसको ले लो एज ए होमवर्क, यू गो थ्रू रिलेटिव प्रोनोमन एंड रिलेटिव प्रोनोमन का ही एक होमवर्क दे रहा हूं आपको, और एक ही है बस। पेज नंबर 109 109 109 पेज नंबर 109 पे जो भी है इसको टेक्स्ट को करके आना है। एंड रिलेटिव प्रोनोमन, रिलेटिव प्रोनोमन में से थोड़ा सा आइडिया है आपको किस बारे में था? किसी रिलेटिव we are talking, if we are talking about some relative thing, like first sentence name. Take out the common word now from both the sentences Yeah. and Very replace it from the table. Very nice. And what is the difference between this table and then article table? Only the Dative plural. yeah. Genau. Plural will be So them, their, them, Then double N. dinner, Dinner. dinner. Only this is the difference. आपकी नॉर्मल टेबल में उसका मीनिंग होता है डेर दी दास दी का द, और इसमें क्या मीनिंग होता है? That, with, who, यस, वेरी to. नाइस। दैट, विच, हु, और whom, और टू whom, सब याद रहता है तुम लोगों को। वेरी नाइस। मैस्कुलिन, फेमिनिन, नॉइट्रल, प्लूरल, नॉमिनेटिव, आकुजाटिव, डाटिव। अगर आपको ये बोलना हो कि he is the man whom I have met yesterday, तो जिससे मैं कल मिला हूँ, he is the person, this is last sentence for today, he is the person whom I have met yesterday। बाकी कल करेंगे, बस ये लास्ट सेंटेंस बना दो आप तो। Personen, comma, er Ist der Mann. ist Die person. die Person, ist die Person. comma, der Der, yeah. देर क्यों? जिससे आप मिले हो। Then अब because it's male. डेर मान तो मत समझो इसको, पर्सन तो फीमेल भी हो सकता है। Person D. आर्टिकल इज दी। But it is he, no sir, he is the person. ओ ही लिख दिया क्या यहाँ पे? ओके, that is why when we are using air, so No, no, no. their man. ही इज द पर्सन, यहाँ पे ये आ गया तो आर्टिकल अलग हो गया। एर इज दी पर्सन, अब डेर मान नहीं बोल सकते ना, नहीं तो मैं लिख देता ही इज द मैन। यहाँ पे अगर मैंने पर्सन यूज किया तो दी करना पड़ेगा आपको, ऑल्दो मैं इसी के लिए कह रहा हूँ, बिकॉज ये तो मैं किसी फेमिनिन के लिए भी बोल सकता हूँ, बट यहाँ पे मैंने Okay. Er ist die Person, dem. अगेन इसको भी मानो आप, The द पर्सन whom I meeting, Okay. Der. दी the ish treff मिट आएगा तो फिर तो जिस तरह यूज करोगे फिर तो आप D is gestern treffen. दी इस्ट गिस्टर्न treffen गिट्रोफन हावे। चलो आज आपके पास टाइम है, इसको एक बार वापस रिवाइज कर लो, सारा टिप्स पे वापस आ जाएगा, ठीक है? होमवर्क कम तो नहीं है ना? Then. Okay.